ओके पिला माने आमे पढ़ुतले न्यूक्लियर फिजिक्स कौन पढ़ुतले न्यूक्लियर फिजिक्स रे लास्ट क्लास रे थिला समहाउ मने पकाओ डीके कांस्टेंट पढ़े ना डीके कांस्टेंट आज पढ़िबा हाफ लाइफ कौन पढ़िया हाफ लाइफ हाफ लाइफ समाव तुम इन बुझी पारुच जे हाफ लाइफ रो कांसेप्ट कौन ना जेकोसी गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जेकोसी गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रो इनिशियल जतिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थिला सेति अधा हवा पई के समय लागिवो 1000 टा न्यूक्लियाई 500 टा हबो के समय लागिवो दैट इज हाफ लाइफ दैट इज हाफ लाइफ It is the time within which the number of nuclei of radioactive substance of what radioactive substance become half of its original value. Okay, it is the time within which the number of nuclei of radioactive substance become half of its original value. Initially जत्रा nuclei थिबो ता आधा हबो ए आधा हिते केत समय लागे सेडला ता half life. Okay, now relation between decay constant and half life निभुची relation between decay constant and half life. What the relation between them? का भितर decay constant और half life. decay constant कौन थिला लैम्बडा हला लैम्बडा और t हाफ भितर रिलेशन कौन देखियो as n is equal to n naught exponential minus lambda t. Yes or no? It already पढ़ी चे decay law, statistical law or exponential law of the radioactivity. n is equal to n naught exponential minus lambda t. अड़ी n के instantaneous number of atom particular सही moment रे केतरा atom अच्छी बा केतरा nuclei अच्छी n naught tahला initial number of nuclei at t is equal to t half n becomes n naught by 2. yes or no जब हम टाइम टा को हाफ लाइफ कर दवा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एटम्स टा बा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टा आधा ही जब इनिशियल हेंस एडी n जगह जदी पकेबा n naught by 2 here we can have n naught
एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी जगह पड़ो टी हाफ टी जगह पड़ो टी हाफ हाफ लाइफ मैंने गोटे टाइम पीरियड टाइम जी समय भितर कि टोटाल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइटा अधा हो हाफ लाइफ न एन नॉट कैंसल और हाफ इज इक्वल टू व्हाट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी हाफ ओके माइनस लैम्बडा टी हाफ और 2 इज इक्वल टू हाफ 2 है ना माइनस टा प्लस हुआ 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्बडा टी हाफ यदि पर किसी डाउट अच्छे कि क्लियर हम टारगेट कौन ना वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड लैम्बडा हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट भीतर में रिलेशन खोलिया देखो निभौची मु बहुत साइड रे लॉग को इन्वॉल्व कर ली मल्टीप्लाई कर ली लॉग बेस e2 आर पटर भी लॉग बेस e को इन्वॉल्व करी लॉग बेस e एक्सपोनेंशियल लैम्बडा टी हाफ लैम्बडा टी हाफ और here we can have your log base e2 is equal to ln exponential cancel हुए जे log base e exponential cancel 1 है गला lambda t half confirm or again we can say here t half is equal to 1 by lambda log base e2 log base e2 को यदि log base 10 2 करिवो 2.3026 मल्टीप्लाई करिवो that means again we can have here t half is equal to 1 by lambda को 1 by lambda रहिला एटा है गला 2.3026 log base 10 2 base 10 2 log base 10 रो वैल्यू नियर इक्वल टू 0.3 तो ये मल्टीप्लाई करले आसीबो t half is equal to 0.693 by lambda by very important relation 0.693 by lambda तने हाफ लाइफ रो यूनिट कोन बना सेकंड मिनट आवर बिकॉज ये तो संख्या लैम्बडा रो सेकंड इनवर्स 1 बाय सेकंड इनवर्स इज द सेकंड ओके इट वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन पचारे 3 मार्क्स से रिलेशन ओके अब या ऊपर तो न्यूमेरिकल पेटी की रहबो केम रहलो देखियो बर्तन चेक करियो सही बर्तन एनी डाउट तो दिस द रिलेशन बिटवीन योर हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट केवल गोटे न्यूमेरिकल इन्वॉल्व होची 0.693 and that this is the relation now how to do that numerical on this concept a half life ऊपर केमती न्यूमेरिकल आसे देखा निभो चुपरू प्रॉब्लम करिया पई हमर रिलेशन अछि न्यूमेरिकल पई n by n naught is equal to your half to the power n very important relation n by n naught is equal to half to the power n where n is the instantaneous number of atom or instantaneous number of nuclei and naught is the initial number of nuclei half to half what is n is the number of half lives where n is equal to
नंबर ऑफ लाइफ स्पेल क्या होगा ना LIVES जहाँ भी लेट इट ओके क्या तुम एडजस्ट करो हाफ लाइफ्स or imply that your n is equal to t by t half t by that means total time by half life total time मने करो total time है 10 सेकेंड गोटे हाफ लाइफ है 2 सेकेंड total time है 10 सेकेंड हाफ लाइफ डाला 2 सेकेंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो 5 total time by number of half life okay बस my target is that to derive this relation एटा केमती आसला आगे एटा बुझदवा एटा केमती आसला पचारे नहीं या पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पचारे बट जानिया पय मैं कर दो छला समाह को जिंस निभेई नि माने रखिछि माने किछ काम रे आस्तव सेरा देखिवा बेसिकली में log बेस ई लिखिवा जा लॉन्ग लिखिवा से हम फिजिक्स रे में ए माने कि चलो हैला डेरिवेशन ए रिलेशन को हम डिराइव करिया समझ बुझी परछ तो या पर प्रॉब्लम कोला मजा लागियो बढ़िया डेरिवेशन as we can have 2 is equal to exponential lambda t half is equal to exponential lambda t half है और ln 2 is equal to lambda t half एक्सपोनेंशियल एप्लीकेशन लॉ ना बनी और यार lambda is equal to ln 2 by t half as n is equal to n not exponential minus lambda t yes or no now we can have your n is equal to n not by any problem exponential lambda t or we can say here n by n naught equal to 1 by exponential lambda जगह ती पड़ जावा ln 2 by t half into t okay or again we can have your n by n naught is equal to 1 by 2 to the power t by t half yes or no again your exponential ln cancel then रहला 2 exponential ln 2 exponential lambda t half lambda जर पला ln 2 by t half ठीक है तो ln 2 by t half any problem बस exponential ln 2 कितना 2 t by t half that means your n by n naught is equal to a half to the power t by t half silently जाओ no problem एट्टी पटन बुझेला n by n naught 1 by this one एक्सपोनेंशियल कैसे रहिला खाली लैम्बडा जगह रे वैल्यू पुट कर दिले एटा t मल्टीप्लाई हे केतिला रहिला एक्सपोनेंशियल ln 2 is the 2 to the power t by t half
overall T by T half, or we can say your n by n naught is equal to half to the power n. I have already told you n is equal to T by T half. N equal to T by T half. For n के number of half lives. Small t is the total time. T half is the half life. Half life. है ना? बस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर दो. देखो क्वेश्चन नंबर 1. One question is that Nibuji, one question is that very important question. To decay. Bismuth has a half-life of 5 days. The half-life is given 5 days. What is the time taken by 7/8 part of the sample to decay? Then decay habo kete 7/8 rohibo kete 1/8. That's important. Hello. Magiji kona, what is the time taken? Total time. Total time Magiji. Half life is given 5 days. Very good. Here n is equal to n naught minus 7/8 of n naught. Yes or no? Question double se pucha. What the time taken by 7/8 part of the sample to decay? Mane etiki part decay habo. Tane mane karo initially thila etiki n naught decay habo taro etiki part. Tane rohi jibo kete n naught by 8. Remaining part n is equal to n naught by 8. Just put the value and get the answer. Same relation kam kar jibo. That means here we can have as n by n naught is equal to half to the power n. That means n jagar padila n naught by 8. N naught by 8 by n naught is equal to half to the power n, or half to the power n is equal to n naught can cancel. 1/8 means 1/2 to the power 3. 1/3. एबड़ा क्वेश्चन दिमाग में पिटी हो पारियो ना, पिटी के रही क्वेश्चन. That means here we can have your n is equal to 3. हो गया? Or imply that your t by t half is equal to 3. That means t is equal to t half into 3. Your t half is given 5 days. 5 into 3, that is 15 days. Okay, 15 days. The answer will be 15 days. हो गया? So this is all about your half-life and the relation between half-life and decay constant. Half-life and decay constant. Now come to activity. Now come to activity. Le baby.
योर एक्टिविटी ओके केतरा जगह रे एको सिंबलाइज कराई छी ए कैपिटल ए केतरा जगह आर भी सिंबलाइज कराई छी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग नो चेंज ए जे आर सी सेट सेंटेंस रो बुझा पड़ जिवो जेटा कोन कहूछ एक्टिविटी व्हाट इज दिस ना द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस the total rate of disintegration of a radioactive substance is called its activity ता माने पर सेकंड रे केतटा एटम डिके होछ बा केतटा न्यूक्लियाई डिके होछ केतटा भांगी भांगी जाउछ पर सेकंड रे सेटा ता एक्टिविटी बुझ पड़छ ना कथरा एक्टिविटी ऑफ ए radioactive substance is defined as total rate of disintegration of the substance. Activity of a radioactive substance is defined as total rate of disintegration of the substance, or we can say here number of decays per second, number of decays per second of the substance is called its activity. Number of decays per second of the substance is called its activity. हला माने पर सेकंड रे केतरा न्यूक्लियाई भांगुछ ने बेबी यार मैथमेटिकल डेरिवेशन देखिवा हेडिंग दियो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पे एक्टिविटी पे ओके as n is equal to n naught exponential minus lambda time एटा ऑलरेडी में जानी चाहिए एक्सपोनेंशियल लॉ डिके लॉ स्टैटिस्टिकल लॉ जहां भी कोई पारे और यार वी कैन हैव यार dn by dt is equal to यार minus lambda n naught exponential minus lambda t okay now dn by dt is equal to minus lambda n yes or no this n not exponential minus lambda t is the n now a activity के ना mathematically activity टा हला minus dn by dt you know dn by dt is the rate of disintegration rate of that is the activity rate of disintegration is the activity so mathematically यार एक्टिविटी जरा सिंपल मैंने होचे ए कोटी कोटी आर भी नहीं जी नो प्रॉब्लम ए इज इक्वल टू हियर माइनस dn बाय dt माइनस dn बाय dt है ने एटा केते हे जिवो लैम्बडा n तो dn बाय dt टा माइनस लैम्बडा n तो माइनस dn बाय dt तो लैम्बडा n तो a इज इक्वल टू क्रिकेट रो कंच और दैट मींस here a is equal to lambda n है ना similarly at t is equal to 0 second
the time टा 0 होइथिबो एटा हिजबो a naught initial activity at t is equal to 0 second here a naught is equal to lambda n naught yes or no जेमिति कि a is equal to lambda n तो a naught is equal to lambda n naught hence a by a naught is equal to n by और n by n naught रो ओरिजिनल में तुम जानी चाहिए एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t और we have a is equal to a naught exponential minus lambda t जेमती थिला n is equal to n naught so a is equal to a naught literally these are different things kind of concept अलगा but mathematically these are same जेमती कि माने पका कथा पड़ला dielectric constant and relative permittivity electrostatic रे literally they are different but numerically they are same हला now edge lambda is equal to 0.693 by t half or imply that lambda n is equal to 0.693 n by t half any problem n multiply goes and your lambda n is equal to what a तो activity और half life with relation बाहर a is equal to 0.693 n by t half by t half तो overall we can say जदि हमें लिखी परचे a is equal to a naught exponential minus lambda t तो हमें जदि लिखले n by n naught is equal to half to the power n similarly we can say a by a naught is equal to half to the power n yes or no that means mathematically this relation पाया पे हमें लिखी परिवा ठीक कहीं कोना यदि ये कांस्टेंट है गला a n सगरा डायरेक्टली रिलेशन है ना n by n naught is equal to a by a naught is equal to half to the power n so this is your activity and relation mathematical relation तो यूनिट टा देखि दबा एक्टिविटी बाय को कहा जाय रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाय रेडियो एक्टिविटी निभौ जी commonly used units are ए जो एक्टिविटी रो commonly यूज करिए यूनिट गुडा कौन कौन क्यूरी CI है ना CI the activity of a radioactive substance
is said to be 1 Curie if 3.7 into 10 to the power 10 this integration takes place per second बुझी पाला कथा जदि पर सेकंड रे एतिकी डिसइंटीग्रेशन होतबो एतिकी डिके होतबो ताले तार एक्टिविटी कोन कहजबो 1 क्यूरी दैट इज योर 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 decay per second. Decay per second. Similarly, your 1 millicurie 3 कमिबो बस 3.7 10 to the power 7 decay per second. 1 microcurie अरे आसना तळू आसना आसो 3.7 and 4 8 जीवो decay per second. So this is all about Curie. Curie टा किए हला ना यूनिट ऑफ एक्टिविटी और रेडियोएक्टिविटी सेमती नेक्स्ट ला बिक्यूरेल कोन देखिबा बिक्यूरेल नहीं बेबी बिक्यूरेल शॉर्ट में BQ एडाला SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी So 1 becquerel is equal to 1 decay per second. Okay, 1 becquerel is equal to 1 decay per second. So 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. Yes or no? Because 1 Curie is equal to this decay per second. 1 decay per second is the 1 becquerel. This decay per second is the this becquerel. Next last one, Rutherford. मोर डेफिनेशन लिखुनी जेटा लिखितली क्यूरीर से टाइप रो हबो जदि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड एतिके होतबो ताले क्यूरी एतिके हेले बिक्यूरेल एतिके हेले रदरफोर्ड डेफिनेशन एका खाली वैल्यू चेंज होछ रदरफोर्ड RD if 10 to the power 6 decay per second then the activity is said to be 1 Rutherford. This is the CGS unit. Here 1 Rutherford is equal to 10 to the power 6 decay per second. Hello? Decay per second. So this is all about your units of the activity or radioactivity. Activity or radioactivity. Now come to dimension. A activity ro dimension कौन होगा? M0 L0 T-1 per second अच्छी ना T-1 कारण संख्या को बुझो जी एतिकी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड माने पर सेकंड रे एतिकी डिसइंटीग्रेशन ऊपर डाला संख्या तो टाइम अच्छी T-1. Now come to
योर एवरेज लाइफ कौन लिखा एवरेज लाइफ लास्ट वन एवरेज लाइफ बेबी एन क्वेश्चन छाड़ दब एन क्वेश्चन आसले छाड़ दब तुम छाड़ दब डेरिवेशन आस कि प्रॉब्लम आस पिटिक कर आराम से कर ओके एटा कौन ना अरिथमेटिक मीन ऑफ द लाइफ्स ऑफ ऑल द एटम सपोज आम अच्छे ये 5टा एटम मु 5 सेकेंड बचिली तू 3 सेकेंड से 6 सेकेंड 7 सेकेंड 13 सेकेंड बचिले समस्त लाइफ को ऐड कर दियो बाय टोटल नंबर ऑफ एटम दैट इज द एवरेज लाइफ है जमी करना हर इंडिया रे हाराहारी बयस 60 मान कथा बुझीपार ना से ना किए केते वर्ष बंचला ऐड कर दिया बोले एवरेज लक्षे लोक को 1000 लोक को नहीं नियाला 100 लोक को नहीं नियाला एवरेज टाइम बाहर ना नहीं नियाला एप्रोक्सीमेट देखला ये 30 वर्ष मरला से 70 वर्ष से 90 वर्ष से 81 वर्ष ऐड कर दियो बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन एवरेज लाइफ बाहरी आछ ठीक सेमते एटा से इट इज द arithmetic mean of lives of all the atom. It is the arithmetic mean of this is the mean lives of all the atom. That is tau is equal to sum of lives of all atoms by number of atoms. Sum of lives of all atoms by number of atoms. Mathematically, tau is equal to 1 by lambda. ए रिलेशन में नेक्स्ट क्लास में देखिवा प्रूव कर 1 by lambda. क्लियर नेक्स्ट क्लास में एठू आगेवा आज आ गोटे प्रॉब्लम दउछि आ गोटे हां कर निभौछि एवरेज लाइफ टाइम नेक्स्ट क्लास रे एनलार्ज करिया. क्वेश्चन इज दैट ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट reduces to 25% of its initial mass in 1000 years. Find its a half-life period. Find its half-life period. होगा या नहीं होगा? Reduces to 25% and becomes 1/4. Reduces to 25% माने कौन? Becomes 1/4. That is n is equal to n naught by 4.
कॉन्सेप्ट क्लियर 25% है गला रिड्यूसेस टू 25% तमने रहिला केते 1/4 बस as n by n naught is equal to half to the power n that means n जगह पका n naught by 4 by n naught is equal to half to the power n is equal to half to the power 2 because 1/4 तो n is equal to आपका हो गया 2 n is equal to t by here t half is equal to 2 that means here t half is equal to t by 2 t is given 1000 by 2 that is 500 years 500 yes okay बस इतना फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कीप इट अप